Welcome back. आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ and here we are talking about the Australian side coming into the ICC World Cup 2011 and of course we are very grateful for Dean Jones for being with us for so long. आमिर भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर seems to be a little bit weak and you need players जो कि गेम को फिनिश कर सकें. अगर ऊपर कोलैप्स हो तो वो बिल्ड करके डिफेंडेबल टोटल दे सकें और अगर चेज कर रहे हैं तो दे कैन फिनिश ऑफ द गेम्स एंड दे हैव हैड ग्रेट प्लेयर्स इन दैट स्लॉट. दे हैड लीमन्स, दे हैड बेवन्स एंड देन ऑफ लेटली दे हैड माइकल हसी, प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 3 years रनिंग एंड ह्यूज एक्सपीरियंस. स्टीव वॉ वाज देयर, डेमन मार्टिन ऑफ कोर्स. आई मीन बिग नेम्स. ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें कि उन्होंने हमेशा से अपनी जो क्रिकेट है उसको बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के उन्होंने प्लान किया. बिल्कुल सही. उन्होंने हमेशा एम्फोसिस जो है टॉप जो बैट्समैन है उनके ऊपर रखा है कि आपने करना है और उसके बाद उन्होंने फिनिशर रखे हैं नंबर 6 और नंबर 7 के ऊपर. डेमियन मार्टिन स्टीव वॉ का कॉम्बिनेशन था. बेवन आ गए फिर उसके बाद अभी आप हसी को देख रहे हैं, उनके साथ कैमरन वाइट हैं. तो ये एक फॉर्मूले के साथ क्रिकेट खेलते हैं. अगर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन्स नहीं करते तो फिर ये नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं ये मेक श्योर करते हैं कि ऐसा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया जाए जिससे बॉलर्स को चांस दिया जाए कि मैच जीता जा सके. They don't let you off. और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ T20 में ये सेमीफाइनल जीते, हसी ने एक्सप्लोसिव बैटिंग की, साथ में मिचेल जॉनसन ने आके साथ दिया. तो आई थिंक हसी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस फॉर देम. और इसी को हम बिल्डअप करते रहे तो देयर इज अनदर. और कल का मैच स्पेशली जो आपने देखा कि अच्छा स्टार्ट मिला. 130 के ऊपर उनके 2 या 3 खिलाड़ी आउट थे. एकदम से 2-3 विकेटें गिरी. एक्सपीरियंस नहीं था हसी या स्टीव वॉ या बैमन वाला कि कोई प्लेयर आके उस सिचुएशन से आराम से टीम को निकाल के फिनिश करता और मैच जितवाता. रन्स ऑन द बोर्ड आइदर जी. दे वर चेजिंग जस्ट अबाउट 4 समथिंग एंड ओवर. लेकिन इनएक्सपीरियंस ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशंस जिसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं कि वेदर दीज यंग प्लेयर्स विल बी एबल टू होल्ड द प्रेशर. एंड अबव ऑल माइक हसी का एक और बयान था व्हिच आई थिंक वाज वेरी moving and touching and obviously a little bit controversial कि Andrew Simmons को लजाया गया 2003 World Cup में when he was not fit, so why not me? And I think might be Australia might be missing a point here, but let's go to Dean Jones and ask him. Mr. Dean Jones, once again thank you so much for being with us. But you know, Australian cricket, they have had this middle order greats and the exclusion of Hussey from the World Cup when he could have been fit just you know, exposes the middle order to all the teams and they will be targeting them of their inexperience and inability to achieve the targets or to put up a big total if they have earlier losses. What do you have to say about it? He's a class act, isn't he? Again, he is. I'm only worried about our top 4. Okay. Our top 4 being Watson, Haddon, Ponting and Clark. Now here's the stat for you, gentlemen. Out of the last 9 World Cup finals, 7 batsmen, or engine room players as I refer to them, 7 of them out of the 9 have been in the top 4 batsmen. Okay. That's how important this role is. And if those 4 guys aren't getting you runs in this series, you will lose. I don't care about your number 5 or who's your finisher or who's your bowlers. More important is the top 4. Now, with the Michael Hussey situation, I can't believe they haven't taken him for one reason. Is because he did this injury after the team was selected, after the 15 was done. So technically he could have gone over there. And he did all these sprints yesterday in Sheffield Shield cricket over here. He averages 50. He's a powerful player, and he said would have been ready by the end of February or the first week of March, and he'd be all ready and raring to go. So I'm surprised that they haven't gone with him in that regard, but. Then again, Ricky Ponting, well, he's won 2 World Cups. He's a winning World Cup twice. What he's doing, and, well, they've gone for youth. But the bottom line is, boys, the top 4 batsmen must get your runs. If they don't, it's... Absolutely. Okay, Dino, I'm going to test your punting skills. Who's going to win the World Cup? Who's your favourite side? Well, I'll go the other way, Amir. I like to pick. I'll give you my 4 who I think will make the finals, the semi-finals. Okay. And what happens after semi-finals is anyone's guess, as you know. So I think India will make it. I think Australia will make it. I think South Africa will make it, and I think Sri Lanka will make the top 4. So my Pakistan is my boys because I know how good they are. I know once confidence, and they go from, they can be from awful to some of the greatest team in the world. You've got that much talent over there, it's a joke. And if it's harnessed right,
and the confidence starts early, and you start to hurt some people, then all of a sudden they're like young kids. They'll grow 2 feet in confidence. So, but I think Australia, South Africa, India, and in Sri Lanka. But then again, I don't trust India either, boys. They can also put in some shocking performances, and if Tendulkar doesn't get runs early or something happens, they also can quickly go out of it, like they did in the last World Cup. So, all in all, I think it's not cut and clear who's going to get in, but they're the 4 I'm looking. I think they're more likely to get in than others. If Australia win this World Cup, it'll be the greatest sporting achievement ever by this country, ever in its history, by any person or anything. Can you imagine winning 4 World Cups in the second largest team sport in the world? Mr. Gene Jones, thank you so much for being with us, and it's such an honor to have you on our show. And I think the last point that he just left us with, the second largest team sport in the world, and Australia winning it 4th time in consecutive. I think this is something awesome. देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, कोई दुनिया की टीम ने इस तरह नहीं किया हुआ। इंडिविजुअल्स ने आपने देखा होगा बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हुए, जहांगीर खान इन स्कॉश, जान शेर खान, बियॉन्ड बॉग्स और फिर सैम्प्रस, और इनकी बात करें गोल्फ में अगर आप बात करते हैं टाइगर वुड्स हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं, उन्होंने काफ़ी अचीव किया हुआ। बट टीम स्पोर्ट में ये बहुत बड़ा कारनामा होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम का। Absolutely. हमने यहाँ पे और सी चीज़ें डिस्कस करेंगे. Obviously, we're going to show you the trivia and also the montage for Australian cricket. But right now we are going for a short break. हमारे साथ रहेगा. We'll be right back.